Welcome back kids. Now it's part 7. So today we have to discuss these three topics: spore formation, regeneration and fragmentation. Spore formation is also known as sporulation. So what are spores? Spores are unicellular, thin-walled propagules. Propagules. Okay, spores are made up of one cell and they are very thin walled and they are a mean of asexual reproduction. So spores are of two types: motile spores and non-motile spores. Motile which can move, non-motile which cannot move. Example of motile spores are zoospores. Zoospores. So zoospores are present in zoosporangium. ज़ूस्पोर्स के एग्जाम्पल्स हैं आपके क्लेमाइडोमोनास एंड यूलोथ्रिक्स। क्लेमाइडोमोनास आपने देखा होगा किस तरीके का इसमें स्ट्रक्चर होता है। दिस इज ज़ूस्पोरेंजियम, ये इसके अंदर आपके दीज आर ज़ूस्पोर्स। These are zoospores. Zoospores are flagellated. Two flagellas are present in them, and they are generally present in aquatic organisms. Aquatic organisms like Eurythrics and Chlamydomonas. There are so many non-motile spores like aplanospores, akinides, conidia. So conidia you can say present in penicillin. Penicillium. This is the structure of penicillium. They are present on special hyphae called conidiospore. Conidia are externally born. These are conidia. They are external spores. So these are the spores which are used for the asexual reproduction in organism. Next is regeneration. Re means again, generation is production of organism. So it is basically for the production of the lost part or for the repairment. Okay, so it is of three types: morpholexis type. Morpholexis occur in lowly organized organisms where complete organism is formed. Example: planaria and hydra. Planaria and hydra. Planaria has the highest regeneration capacity. Highest regeneration capacity.
सो दे हैव स्पेशल सेल्स. फॉर एग्जांपल प्लेनेरिया आप देखोगे, प्लेनेरिया का इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. इफ इट्स बॉडी ब्रेक्स इनटू 3 पार्ट्स, then all the 3 parts will make the complete organism. So this type of regeneration is termed as morpholexis. Next, in higher organism, it is for repairment of regeneration part, repair of damaged body part or tissue, body part or tissue. In this case it is called restorative regeneration. What is restorative regeneration? When regeneration of lost part takes place in higher organism to restore damaged part of the body or to restore severe body part, it's called restorative regeneration. अगर higher organism में कोई part damage हो गया है, कोई खराब हो गया, तो उसको रिस्टोर करने के लिए, उसको रिगेन करने के लिए जो आपका रिजनरेशन होता है उसको रिस्टोरेटिव रिजनरेशन कहते हैं. लास्ट वन इज फ्रेगमेंटेशन. When parent body breaks into fragments and each fragment give rise to new organism is called fragmentation. So fragmentation is also happen in lowly organized organism. lowly organized का मतलब है ऑर्गेनिज्म. इसका मतलब है अगर एक ऑर्गेनिज्म एक से ज़्यादा सेल का बना है, वो मल्टी सेलुलर तो है लेकिन उसके सेल्स स्पेशलाइज्ड नहीं है, वो सारे सेल्स एक जैसे हैं, तो वो लोली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म हो गया. सेल्स आर सिमिलर इन सेल्स शेप, दे आर नॉट डिफ्रेंशिएटेड फॉर स्पेशल फंक्शन. अभी एक से ज़्यादा सेल का ऑर्गेनिज्म है लेकिन हर एक सेल उसका डिफ्रेंशिएट होकर स्पेशल फंक्शन नहीं कर रहा है, तो उस तरीके के ऑर्गेनिज्म को लोली ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनिज्म कहते हैं. जब भी उसके हर एक पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म बन रहा है, जैसे कि एग्जांपल आ जाता है इसका स्पाइरोगायरा. स्पाइरोगायरा का आपने को पता ही होगा, हिंदी में इसको काई कहते हैं. इसका स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, रिबन लाइक होता है. ठीक है, तो ये इसका न्यूक्लियस है और इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है. अगर इसकी बॉडी को 3 फ्रेगमेंट में कट कर देते हैं बाय मैकेनिकल इंजरी, किसी मैकेनिकल इंजरी से, या इसके इंटरमिनल सेल्स हैं वो मूव करके इसके फ्रेगमेंट हो जाते हैं, तो हर एक फ्रेगमेंट will give rise to new spirogyra. Each fragment will give rise to new spirogyra. This method is known as fragmentation. It also takes place in some other parts, like other examples are Marchantaceae, Riccia and Bryophytes. इस केस में क्या होता है कि अगर कोई डेथ पार्ट है, कोई आपका नेचुरल डीके पार्ट है, वो मूव करके किसी और प्लेस पे चला जाए, तो उन फ्रेगमेंट से, उन पार्ट से पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन. ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन के एग्जांपल आपके स्पाइरोगैरा एंड सेल एल्गी, and other examples are, these are the fragments and each fragment will give rise to new spirogyra. Other examples are Marchantaceae, Riccia and Bryophytes. Okay, so and in case of regeneration,
the lost part or the damaged part will come again. This method is known as regeneration. If it is takes place in lowly organized organism, then the complete organism will be formed from the lost part. This is called morpholexis. But in higher organism, only the lost part or repaired part will come. It is called restorative regeneration. And in case of spore formation, this generally takes place in fungi fungi, monera and protista. So in spore formation, first the spore will form. What are spores? They are unicellular thin walled propagules which are used for the asexual reproduction. Spores are further divided into motile, non-motile. Motile spores are generally zoospores. They are present in the water. They are flagellated, naked, unicellular. They are flagellated, naked and unicellular. Okay, they are generally present in aquatic organisms like Chlamydomonas, urethrics. These are the zoospores. And non-motile spores are aplanospores, echinates, conidia. Conidia are externally present on the penicillium. Thank you.